So once again, welcome friends. Welcome to the evening meditation. So let us begin with the meditation and then we will go through one of the experiences of what Swami Rama had shared in his book. So let us all take a very comfortable posture. Clasping your hands, fingers into fingers. Crossing your legs. Closing your eyes. Just become one with your breath. The breath that is going in through your nose and the breath that is coming out. Just the normal breath. When we are with our breath, we recognize and we know that everything is perfect. Everything is complete. When we are with our breath, we are connected to our source. Let nothing distract you, friends. No thoughts whatsoever. Every time we are sitting in meditation, we are supporting ourselves. So just enjoy being with yourself, friends. This time is just for you. For you to be here in the now, supporting yourself, knowing yourself, and connecting to that source. Just the breath.
Last 1 minute, friends. Slowly bring back your awareness to your physical body and to your surroundings. Last 20 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Now slowly place your both hands over your eyes for a few seconds. Whenever you're ready, you may remove your hands
And slowly open your eyes. Welcome back, friends. I hope you all have enjoyed the meditation. So, today again, we are taking a story from this wonderful book, Living with the Himalayan Masters. It's about the experiences of Swami Rama when he lived in Himalayas and where he met so many masters. So, today is one story where he speaks about his fear of snakes. Let me tell you about my fear. In my young age, I was usually fearless. I could cross the swollen Ganges River and go into the forest without the slightest fear of tigers. But I was always very much afraid of snakes. I have had many encounters with snakes, but I concealed my fear from everyone, even my master. Once in September of 1939, my master and I came down to Rishikesh. We were on the way to Veerbhadra and camped at a spot where my ashram stands today. Early in the morning, we took a bath in the Ganges and sat down on its bank for meditation. By that time, I had already formed the habit of sitting for 2 or 3 hours without a break. It was about 7:30 when I opened my eyes, and I saw that I was face to face with a cobra. The lower half of its body was coiled on the ground, and the upper half was raised. It was sitting very still, just about 2 feet in front of me, looking towards me. I was terrified and immediately closed my eyes again. I did not know what to do. After a few seconds, when I opened my eyes again and found that it had not moved, I jumped up quickly and ran away. After running for a few yards, I looked back and saw that the cobra was just starting to crawl back towards the bushes. I went back to my master and explained what had happened. He smiled and told me that it is natural for any living creature to be in a state of meditation near someone who is in deep meditation. Another time, after experiencing many kinds of training, I had another frightening experience with snakes. I'd been asked to go to South India, which is considered to be the home of Indian culture. And on one cold and rainy evening, I went to a temple to ask for a shelter. At first, they said, "If you're a Swami, why do you need shelter?" But then a lady came from the temple and said, "Come with me, I will give you shelter." The woman took me inside a small 6 foot square thatched hut and told me to stay there. Then she left. I had only a deer skin on which to sit, a shawl, and a loin cloth. There was no light in the hut, but I could see a little bit from the light which came through the entrance. After a few minutes, I saw a cobra crawling in front of me, and then another one at my side. Soon, I was aware that there were several cobras in the room. I realized that I had come to a snake's temple. It was a very dangerous situation, and I was afraid. The woman wanted to test whether I was a genuine Swami or not. And I was actually just learning to be a Swami. I was very much afraid, but I thought, if I run away at night, where could I go? And if I do leave, that woman will never give alms to Swamis in the future. I decided I will remain here. Even if I die, at least the principles of renunciation will not have been found wanting. Then I thought, that woman does not appear to be enlightened, and yet she can come into this hut. So why can't I remain here without being harmed? Remembering my master's words, I said to myself, if I sit still, what will the cobras do to me? I have nothing that they want. I sat there the whole night watching, and the only thing I lost was my meditation. I could only meditate on the cobras. Despite these two experiences, however, my fear of snakes continued. As a young Swami, many people, even high government officials, came and bowed before me, and I blessed them. But within me was an obsessive fear for snakes.
I would teach the Brahma Sutras, the philosophy of fearlessness, to my students, but fear was there inside me. I tried my best to remove the fear by intellectualizing it, but the more I tried, the stronger the fear became. It became so strong that it started creating problems. With any sudden noise, the thought of snakes would come into my mind. When I sat for meditation, I would often open my eyes and look about. Wherever I went, I would look for a snake. Finally, I said to myself, you must remove this fear, even if you die in the process. It is not good for your growth. How can you lead people who love, respect, and depend on you? You have this fear, and yet you are guiding people, you hypocrite. I went to my master and I said, Sir, he said, I know what you want. You're afraid of snakes. If you knew, why didn't you tell me how to get rid of that fear? I asked. He said, why should I tell you? You should ask me. Why did you try to hide this fear from me? I'd never kept any secret from him. But somehow I did not tell him about this fear. Then he took me to the forest and said, we are observing silence starting tomorrow at dawn. At 3:30 in the morning, you will get up and collect the leaves and wild flowers for a special worship that we will do. The next morning, I found a big heap of leaves. As I picked up the heap in the darkness, I realized that there was a cobra in it. It was in my hand, and there was no escape. I did not know what to do. I was so frightened that I was on the verge of collapsing. My hands were trembling. My master was there, and he said, bring it to me. I was shaking with fear. He said, it will not bite you. The unconscious fear welled up nevertheless. My mind said, it is a death that you are holding in your hand. I believed my master, but my fear was stronger than my belief. He said, why do you not love the snake? Love? I cried. How can you love something when you are under the influence of fear? This is a familiar situation in the world. If you are afraid of a person, you cannot love him. You will be unconsciously afraid of him all the time. The cause of fear grows in the unconscious. My master said, look, it's such a beautiful creature. It roams all over. But look how clean and neat it is. You do not remain clean. You have to take a bath every day. A snake is the cleanest creature in the world. I said, it is clean, but it is also dangerous. He told me, man is more unclean and poisonous than a snake. He can kill and injure others. Each day, he projects poison in the form of anger and other negative emotions on those with whom he lives. A snake never does that. A snake bites only in defense. He went on. When you are fast asleep, does your finger prick your own eyes? Do your teeth bite your tongue? There is an understanding that all your limbs belong to one body. The day we have a like understanding that all creatures are one, we will not fear any creature. I continued to hold the snake as he talked, and gradually my fear subsided. I began to think, if I don't kill snakes, why should a snake kill me? Snakes don't bite anyone without a reason. Why should they bite me? I am nobody in particular. My mind gradually began to function normally. Since that experience, I have not again been afraid of snakes. Animals are instinctively very sensitive and are receptive to both hatred and love. If one has no intention to harm animals, they become passive and friendly. Even wild animals would like to associate with human beings. In the valleys of the Himalayas, I observed this tendency in animals over several years. They come near the villages at night and return to the forest early in the morning. They seem to want to be near human beings, but are afraid of humans' violent nature. A human being, with all his selfishness, attachments, and hatred, loses touch with his essential nature and thus frightens the animals, who then attack in self defense.
If a person learns to behave gently with animals, they will not attack him. I often remember the way Valmiki, St. Francis, and Buddha loved animals, and I try to follow their example. Fear gives birth to insecurity. Fear gives birth to insecurity, which creates imbalance in the mind, and this influences one's behavior. A phobia can control human life and finally lead one to the insane asylum. A fear is examined, it will usually be found to be based on imagination, but that imagination can create a kind of reality. It is true that fear creates dangers, and human beings then must protect themselves from that self created danger. All of our dreams materialize sooner or later. Thus, it is really fear that invites danger, though we usually think that danger brings on the fear. Fear is the greatest sickness that arises from our imagination. I have seen that all fears and confusion need only to encounter some practical experience, and then they can easily be overcome. The first 10 commitments of the Yoga Sutras are preliminary requisites for attaining samadhi. And the first is ahimsa. Ahimsa means non killing, non harming, and non injuring. By becoming selfish and egotistical, human beings become insensitive and lose the instinctual power. Instinct is a great power, and if properly used, can help one in following the noble path of ahimsa. In all my years of roaming in the mountains and forests of India, I have never heard that any sadhu, Swami, or yogi was ever attacked by any wild animal. These people do not protect themselves from the animals or natural calamities like avalanches. It is inner strength that makes one fearless, and it is the fearless one who crosses the individual consciousness and becomes one with the universal consciousness. It is the fearless one who crosses the individual consciousness and becomes one with the universal consciousness. Who can kill whom? For Atman is eternal, though the body must return to dust sooner or later. This strong faith is enjoyed by the sages of different orders in the lap of the Himalayas. What a great message, friends, that Swami Rama had shared to us about fear and phobias and how we can overcome it. And the moment we drop the fear, then we are no more with the individual consciousness, we are one with the universal consciousness. And we should never be in confusion. When we have fear, we are in confusion, we are in insecurity. When we drop the fear, then we are one with everything. So it's really wonderful, wonderful stories that they have narrated, that he had narrated, and how his master had given him a lot of lessons, how to see the beauty in even the wildest creature that we think that we are scared of. So we have to see the beauty, then only we will drop the fear. So we have to love everything, every being. So wonderful. So friends, if you have anything to share, you can just go ahead and unmute yourself. Thank you, Madhuji. This is Swarna. Yes, Vannaji. Beautiful, beautiful wisdom sharing. The experience of Swami Rama. Yeah, when I saw the title, I thought it's for me because I used to fear a snake so much. Mm-hmm. But slowly, I'm just contemplating it within my head that they are whatever Swami Rama had shared. They're also like an animal like us, and they don't harm. Actually, they are more uh, compassionate or loving than any human beings because they don't have this intellect and they don't see, I have to harm them and all. They only try to protect them.
because every animal who took birth, they have that capacity to protect themselves. So that's why whenever they sense there's a danger, maybe that's the time they may try to harm or try to hiss on them, but it's never wanted to do any harm without any reason. So I'm just maybe I don't know if I can see snake I can handle, but yeah, in the middle I could notice, like, it was crawling, and I was just noticed from the distance. Earlier I used to go away from the snake, but now I think we have to go, means even if we see it, we have to just pray and wish that it goes to its home safely. So when we have that intention, I think fear will go away. Yeah. So I just practice, and really I saw when you were reading about Swami Rama, I was like, I'm like that. If when my kids say there's a something here, mom, come here, then I would first thing it would come is like a snake. No, tell me what it is, then only I'll come and see. Yeah. So several times they showed me snake, but I did not see. So yeah. So thank you so much for showing us and how we could compare the humans and animals. And animals too want to meditate because they are like close to the godly. We have come far from animal to human, and we have developed all this intellect. That's why we have all analytical mind, logical mind, but they don't have any mind. So they just they're close to God, and wherever there's a peace, they want to stay there and live there. So thank you very much for sharing this, Madhuji. Especially my dog, one instant is like, if I meditate, it would come meditate quietly, it would sit. If there is any shouting or quarrel or something, we are shouting in the house, argument going on, it will run downstairs and hide himself. So from seeing him, we wanted to be like loving and compassionate, and from it taught us to be like quiet and no shout, and always like be loving, because we have seen several times running away from us. It was funny. Thank you so much, Madhuji, as always. Thank you, Swarnaji. Thank you for sharing. Hi, Madhuji. It's Nina here. Yes, Nina. I have one question. I love this story, but I'm still, I'm a newbie to this path, and I have one question. Yes. Like from last couple of days, I'm noticing when I meditate, all of a sudden, like I feel that there's a snake, in my like imagination. I know it's not real, it's imagination. Like a black image, like snake comes up. What should I do? I mean, I've been ignoring. I try to focus on breath, but it has been coming. Like, I don't know why. Like, see, there are a lot of interpretations to what we see in the meditation. We don't know whether it is an imagination or it is a vision that we are seeing. However, we are here not to analyze. And whenever you see anything in the meditation, or I don't say imagination, because if it is an imagination, then I ask you to, come back to your breath. And again, if that imagination, if you're imagining anything, you just come back to the breath. But if it is a vision that is happening naturally, without any mind's job, then wait for it, or wait for the time till it reveals itself, or why it is coming to you. And if still it is there, go deeper into that to that vision that you are seeing in your meditation. And I don't believe in questioning like what you are seeing in the vision, because again, if you're questioning of whatever you are seeing in the vision, there is again a mind's job. There's some interference is happening. So simply witness, simply just witness. If you are seeing if you are seeing any black snake, or whatever, just simply witness. Just without any mind stop, just witness. That's it. Okay.
Yeah. Thank you. And, Thank you and so then with much. time you will understand why you are seeing a snake or any vision. Yeah. Right, right. Thank you. Thank you. But the only thing is have no fear. Like whatever we hear from outside, from the Google or from dreams about the snakes or the visions about the snakes, uh, it is not always the same for everybody. Oh, So correct. That's correct. we should not Mhm. generalize it because everyone's experience is different. So we should never analyze it. That's why we have to just drop it. We have to say, okay, I've seen this, make a note of it, and then with time you will understand why it is. Mhm. Right. Actually, I joined the group today only, beam Mhm. meditation. When Mhm. I saw that picture, I could relate to myself. I was like, I have to join. Really. Yes. Thank Wonderful. you. But thank you so much. Thank you so much, Sinachi. Yeah, I have something to add to that, Madhuji. Yes, please. Was the wonderful explanation. But if I would, what I would do is just contemplate, like, even snake comes in, we should not resist. We have to say, yeah, what is that snake? Snake is also like a human being, like a being, living being. So why it would harm us? Just a little bit contemplate and try to understand it. Maybe this is coming to teach you to be a brave, or teach you to be a compassionate and loving being. So everything teaches us to, it's bringing out what you have, right? So meditation brings that. So just contemplate and bring the love. Any fear is, there is an illusion. So understand that there is no fear at all in this. Mhm. So tell, yeah, it's everything is illusion. So why am I fearing? Even if it is a real snake, what is there? It will not harm. So that faith, when we have faith, then the fear slowly goes, and that fear becomes a love and compassion. So maybe I would do that, Neeraji. So Thank you. thank you. Thank you. Thank you so much. Sangeeta ji, yeah. Yes, you can speak in Hindi. Yeah. अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, you can do that. No problem. You can unmute yourself, please. थैंक यू। क्योंकि मैं इंग्लिश को समझने की कोशिश तो कर रही हूँ, जी। कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आता है समझ में। काफ़ी कोशिश करती हूँ कि जो समझ पाऊँ, क्योंकि कभी-कभी मुझे ये वाला टाइम सूट करता है, तो मैं मेडिटेशन में बहुत सुकून मिलता है मुझे। मैं कहती हूँ स्नेक्स का जो आज टॉपिक चल रहा है, तो बचपन में मैं 6 साल की थी, मेरे पीछे 2 सांप पड़े थे और अम्मी ने उठाया, एकदम से वो भी गिरी हैं और दोनों सांप जो है वो पहले के ज़माने में गाँव में नालियाँ बनी हुई थी, तो वहाँ से भागे थे। वो डर आज तक मुझे है। मैं शिव मंदिर में जाती हूँ, मैं देख ही नहीं पाती हूँ, ना मैं मोबाइल में देख पाती हूँ। बच्चे 1-2 दफ़ा क्या करते हैं, उनको पता है मम्मी डरती है, तो वो नकली सांप लेके मेरे ऊपर फेंका है, तो ऐसा लगता है मुझे अटैक आ जाएगा। तो बच्चों नहीं किया करो प्लीज़। मैं पिक भी नहीं देख पाती हूँ, टीवी में स्नैक्स आते हैं, मैं नहीं देख पाती हूँ। और काफ़ी आप जैसे नाम भी कोई लेता है ना, मैं डरती हूँ। आज उसी टॉपिक के मेडिटेशन पे आप आए हैं, तो मैं ज़रा ये पूछना चाहती हूँ, इस डर सिर्फ ये सांप का नहीं है, हमें काफ़ी चीज़ों का डर होता है। जैसे बचपन से लेके मुझे एक डर बैठा हुआ था, जैसे मर्द होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू हद से ज़्यादा गुस्से वाले थे। ये मुझे बैठा हुआ था ज़हन में। जैसे मेरी मंगनी हुई, शादी हुई, कुछ टाइम तक लगा नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जो बिलीफ बचपन वाला है, मेरे पीछे आता गया। जिन बातों पे मैं बिलीव करती थी और जिस चीज़ से मैं डरती थी, वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए क्या किया जाए, क्या परहेज़ होती है? और काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ये इस साइड पे आ रही हूँ, मैं जब भगवान के नाम पे सोचती तो यही हूँ इन चीज़ों में आ जाऊँ, ज़्यादा बाहर पार्टी-शार्टी जैसे मेरे मियाँ को पसंद है उधर नहीं जाऊँ। लेकिन जब इधर आती हूँ कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है मेरी कभी-कभी, और इरिटेशन जो चीज़ें अंदर हैं बाहर निकलना शुरू हो जाती है।
तो आप थोड़ा मुझे जी, अगर आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। तो जो आपका जो जब हम ध्यान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा महसूस करते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे हमारे अंदर का जो दबा हुआ इमोशंस जो है, जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है, कि हम किसी टाइम वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किए हैं, तो वो जब हम ध्यान में बैठते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जैसे कि बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग गुस्सा बहुत एक्सपीरियंस करते हैं जब वो ध्यान में बैठते हैं। इसका इसका मतलब ये है कि जो हम बहुत सालों से जो हम वो सप्रेस करते आए हैं, तो वो बाहर आ जाता है। जैसे कि वो गंदगी जो हमारे अंदर होती है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देती है, वो बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको आउटलेट की जरूरत है। जैसे कि वो हाँ, बाहर आने की एक माध्यम है, दिस मेडिटेशन है। तो ये मेडिटेशन से लाइक जो भी हमारे अंदर का जो भी गंदगी है वो सब बाहर आ रही है। तो हम फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हम लाइट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं सब सुकून ही सुकून होता है। उसके बाद होता है सुकून। जैसे कि हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो हम थोड़ा लाइट फील करते हैं। जब मेडिटेशन में होते हैं, बहुत सारे कुछ लोगों को बहुत सारे दर्द होते हैं, बॉडी में बहुत पेन्स होते हैं। कुछ कुछ लोग, जैसे कि मैंने बोला, कि बहुत रोते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंफ्यूजन में रहनी चाहिए कि मेडिटेशन सही हो रहा है कि या नहीं। पर हमको करते रहनी चाहिए। जब एक एक दिन आएगा कि वो पूरा हमारे अंदर की वो जो चीजें हमको ब्लॉक कर रही है वो सब क्लीन हो जाएंगे। एंड हम बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। तो एंड फियर जो है, जो हमारा डर है, आई मीन लाइक अदरवाइज, जैसे कि आपके अब्बू के एक्सपीरियंस आपने बोले हैं कि आप जनरलाइज किए हैं कि हर मर्द गुस्से वाले होते हैं। तो जब जब ये ये सोच आप में आई है, तो दूसरा सोच भी आप सोच सकते हैं ना कि मुझे पर्सपेक्टिव चेंज करना है। सब ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं रहते हैं। तो व्हेन यू सी द अदर साइड ऑफ इट, दूसरे साइड देखते हैं, तब वही मैनिफेस्ट होगा। जो जो भी लोग आपको मिलेंगे, या फिर आपके भाई लोग, या आपके हस्बैंड, और जो भी है, जो भी आपके लाइफ में जो अदर पीपल, अदर मैन जो मिलते हैं आपको, तो वो यू नो दे विल नॉट गिव द सेम एक्सपीरियंस जैसे आपके अब्बू ने दिए हैं, क्योंकि आपने नजरिया बदल दी है, कि देखने की नजरिया बदल दी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये स्टोरी में जो स्वामी रामा का जो डर था, कि अंदर वो सांप का डर था, पर वो बाहर बहुत अच्छे लेक्चर्स दे रहे थे, बट उनके अंदर पता है कि ये जो चीज उनको लाइक बहुत डिस्टर्ब करी है, कि उनको एक डर है। पर वो फियरलेसनेस के बारे में सबको ज्ञान दे रहे हैं। तो जब वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक जब उसके मास्टर से मिलते हैं, और उसके मास्टर समझाते हैं कि डर हमको इनसिक्योरिटीज देते हैं। जैसे कि हम कंफ्यूजन में रहते हैं, क्लैरिटी नहीं होता है, तो क्यों हम उस चीज को उतना इम्पोर्टेंस दे। हम जब नजरिया बदल देते हैं, तो पूरा हमारा जिंदगी बदल जाती है। कौन चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगी में लाइक बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइम्स, या फिर नेगेटिव टाइम्स हो। अगर अगर अब तक नेगेटिव नेगेटिव चीजें हो रही है हमारे लाइफ में, देन हम हमारा सोच को पॉजिटिव करना है। जब हमारा सोच को हम पॉजिटिव करते हैं, तो जो फियर है, जो फिर सैडनेस है, जो फिर जो भी हम वो इमोशंस जो हमको नीचे खींच रहा है, तो वो हम उस सब से हमको लाइक फ्रीडम मिल जाएगा, जब एक हम सोच बदल देते हैं। तो
यही उनके मास्टर स्वामी रामा के मास्टर ने समझाया इसमें कि नजरिया बदलनी चाहिए। वो सांप से प्रेम करनी चाहिए। क्यों डर है, लाइक क्यों डरना है उस सांप से। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, वो एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स है, तो वो एनिमल्स हमारे पास आके बैठना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो हमको हार्म करना चाहते हैं। कुछ नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि हम वो इंटेंशन ही रिलीज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हनी बी को देखते हैं, वो हनी बी, इफ यू डोंट, अगर हम लाइक वो डर में नहीं रहते हैं, तो हम ऐसे ही वॉक करते हैं, तो हमको वो हनी बी बाइट नहीं करेगा। जब जब बहुत लोग डरते हैं हनी बी से, मेरी एक दोस्त है, बहुत डरती है हनी बी से, उसी को आके वो हनी बी ने बाइट किया है। हम थे उसके बगल पे, हमको नहीं बाइट किया है, उसी को बाइट किया है। तो हम वो वाइब्रेशंस ही नहीं रिलीज करनी चाहिए कि डर का या लाइक हेट्रेड का। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू द यूनिवर्स एंड वही मैनिफेस्ट होगा। या आई होप मैं मैं आंसर। हाँ, मैं काफ़ी हद तक ये चीज़ समझी हूँ और काफ़ी टाइम से मैं मेडिटेशन यहाँ पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से हूँ, जी यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर शैला अलवी है, वो जी। इस चीज़ को काफ़ी मेहनत कर रही हैं और काफ़ी लोगों को जोड़ा है और उसमें मैं जुड़ी हूँ। और मुझे बहुत सुकून मिला है जब मैं श्वासों से जुड़ती हूँ। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस बात का मुझे डर होता था, मैं अंदर दबाती बहुत थी अपने गुस्से को, अपनी इरिटेशन को, वो चीज़ें मेरी बाहर निकल रही हैं तो मुझे लगता है कि ये तो मेरे रिश्ते बिगड़ जाएँगे और बार-बार मुझे डर भी आ रहा है और मैं वो जैसे इंसान बड़बड़ाता नहीं है कुछ, हम्म जैसे हस्बैंड के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दुखाया है और मैंने ये सोच के चुप किया है कुछ बोलूँगी तो घर में माहौल खराब हो जाएगा, दबा लिया है उसे मैंने, खत्म नहीं किया है। कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लाई है उसके लिए, मैंने नेगेटिविटी आई है मेरे अंदर कि वो ऐसे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो चीज़ें बढ़ती गई हैं और चुप किया है सिर्फ। अब मेडिटेशन के बाद वो चीज़ भले वो सामने हो, मैं बड़बड़ाती रहती हूँ कि ये जो है ना, फिर मैं अंदर ही अंदर कहती हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब इतने साल मैंने चुप किए कि अब मुझे चुप क्यों नहीं आ रही है? क्या हो रहा है मेरे साथ? अजीब-सा ये सिलसिला है, क्या करूँ मैं? या जब भी कंपैशनेट, पहले अपने आप के ऊपर कंपैशन दिखाइए कि लाइक दुनिया इधर का उधर हो जाए, पर अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको बचपन से बोला नहीं गया है कि तुम अपना देखभाल करो पहले। हमको बोला गया है कि सबका देखभाल करो, बाद में तुम्हारे बारे में, अपने बारे में सोचो, बोले हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ चीजें हमको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि बाहर का एनवायरनमेंट हमको डिस्टर्ब कर रहा है, बट हम हमारे ऊपर बहुत काम करना है। जैसे कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ये बहुत अच्छा काम करे अपने आप के लिए, बिकॉज स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो आप कर रहे हैं। ये मत ये टाइम फ्रेम मत दीजिए कि कब मेरा सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाएगा, कब अच्छा एक्सपीरियंस होगा। डोंट पुट ए टाइम फ्रेम टू इट। बस आप ध्यान करते रहिए, आपके साथ लाइक टाइम स्पेंड करते रहिए। एंड जब मैं भी आपको आपको कुछ डिस्टर्बिंग सिचुएशन आपके सामने आता है, तब तक आपका आपका जो सोच था कि मेरे लाइफ ऐसा ही है, या फिर कुछ बदलेगा नहीं, देन यू ट्राई टू चेंज द पर्सपेक्टिव। नहीं, उस टाइम अलग करिए, जैसे कि तब तक करते आए हैं, मैं वैसा बीच में नहीं। एक चीज़ बोलूँ? जी जैसे आप बोल रही हैं ना, पहले मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया था इतना, खुद से जैसे प्यार करते हैं, जो चीज़ मुझे पसंद है वो नहीं की थी। जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, जो मेरे बच्चों को पसंद है वही किया। बचपन में भी यही किया, जो मेरी चीज़ें माँ-बाप को पसंद है, मेरे भाई-बहन को पसंद है वही किया, जो ज़माने को पसंद है वही किया। लेकिन आज पहली दफ़ा ये हुआ है मेरे साथ कि मेरे हस्बैंड बैठे हैं तो उनको पसंद है कि मेरी वाइफ़ मेरे ऊपर खड़ी हो
और वो मेरी हर चीज की केयर करे। और मेरा दिल चाह रहा था नहीं मुझे मेडिटेशन पे बैठना है, और मैं उनको छोड़ के अंदर आके बैठ गई हूँ। अभी मेरा बेटा बोलने आया अब्बू तो चले गए कहीं, उनको गुस्सा लगा होगा, अब तो आके बैठ गई। मैंने कहा जो होना है होने दो। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहली दफा इस डर को मैंने खत्म करके अपने लिए कैसे सोचा। और अब भी मुझे डर नहीं लग रहा है, वो कहीं गए हैं तो ठीक है, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि जी मेरा दिल कर रहा है मैं मेडिटेशन करूं, उनके सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए। अब जी वो ऊपर से इतनी अटेंशन मांग रहे हैं हर वक्त, और मैं दिल से नहीं दे रही हूँ, मैं जबरदस्ती उनके ऊपर खड़ी हूँ। और दिल में ख्याल आते मैं उनकी नौकर हूँ क्या, हर वक्त ऐसे जैसे होटल में कोई रेस्टोरेंट में ऊपर से खड़ा होता है मैं इनके ऊपर खड़ी रहूं और हर चीज करूं। मुझे ये चीज पसंद नहीं है, जबरदस्ती करती हूँ। जो मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करूं, मैं करूं आज। मैं बैठी हूँ तो ठीक है। अब ये बोलने आया है फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा है। पहले मैं डरती थी ये क्या, घर का माहौल तो बिगड़ गया, अभी छोड़ गई मैं तो काम से। लेकिन पहली दफा मेरे साथ ये चीज भी हो रही है, नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है संगीता जी। जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। एंड अब बहुत मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप अपने लिए टाइम स्पेंड किए हैं। जैसे कि आप ये डर से बाहर आके अपने अपने ना बोलना सीख लिया आप। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। करना है, सबका काम करना है। जब काम खत्म होते ही अपने अपना जो टाइम है ध्यान का, उस टाइम पे बैठना है। एंड आपने आज करके करके बहुत अच्छा किया। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड अभी ये डर को निकालिए कि बाद में क्या होगा, हस्बैंड घर आएंगे तो क्या होगा। बस ओनली इमेजिन इमेजिन कि सब अच्छा है, लाइक वो घर आए हैं एंड देन everything is good, like it's with the thoughts we can change everything. हमारे थॉट से हम सब चेंज कर सकते हैं। ये पिक्चर हमको डालनी चाहिए, यूनिवर्स को एक पिक्चर भेजनी चाहिए कि माहौल ऐसा होगा एंड होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट यूनिवर्स विल डू। या So right, so right. Thank you. वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू, संगीता जी। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बोले आप, ताकि ये सबको हेल्प करे। एंड सब गुजर रहे हैं वो सिचुएशन से, पर कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पर आप बहुत हिम्मत से आज हमारे सामने ये सब एक्सप्रेस किए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। वेरी वेरी हैप्पी टू हियर योर बोल्डनेस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Yeah. So wonderful, friends. And it was really a wonderful experiences. And thanks to Swami Rama and all these masters whom we know and whom we don't know. So they are inspiring us all the time. So let us take these lessons. Fear doesn't only mean uh, of the snakes here. We are speaking about all kinds of fear. So remember that any kind of fear leads to insecurity. And when there is insecurity, then there is no life. So drop all the fears, address your fears. Whenever you have any fear, address that fear and go to the core of it and just make peace with it, and bring a higher understanding to that fear. That fear dissolves. It's just, I'm not saying that you have to just put the fear in the back seat. No, I'm saying that you have to address the fear and then move on. So if you don't address, then some or the other time it will keep on coming. So thank you so much, friends, for patiently being here. And we will all see each other again tomorrow morning for a Shashank's session. Till then, namaste. Thank you. Thank you.